क्या हम लाइव जा सकते हैं? क्या हम लाइव जा सकते हैं? लाइव 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 हमारे लाइव 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 लाइव। अच्छा हाँ, लाइव तो मैं हो गया। यूट्यूब अरे सही हो जाएगा। आज एक बहुत ही रैंडम आइडिया आया मुझे। आज मैं सर्च कर रहा था ऐसे ही फोटोग्राफी वीडियोस, तो ऐसे ही मुझे नॉर्मली एक आइडिया आया कि जो मैं सर्च करता हूँ फोटोग्राफी के लिए, जो मैं देखता हूँ फोटोग्राफी के लिए, अपनी फोटोग्राफी को इम्प्रूव करने के लिए, या कभी भी यूट्यूब खोल रहा हूँ और फोटोग्राफी कंटेंट देखना है तो मैं यही देखना प्रेफर करता हूँ, यही सब चीज़ें। तो मैंने उसकी वॉच लिस्ट बना ली है, वॉच लेटर करके एक लिस्ट बना ली है। तो आज हम उसी लिस्ट को देखेंगे, उसी सेम लिस्ट को। और उसके पहले मैं एक काम कर देता हूँ बस, जस्ट वन स्मॉल थिंग, जस्ट सम स्मॉल अरेंजमेंट्स, फिर शुरू करते हैं। एक मिनट, कैमरा सही आ रहा है? कैमरा टाइम पे आने के लिए मैंने ये सब पहले किया ही नहीं। ओके 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 ओके, बस मेरी चैट्स नहीं दिखनी चाहिए, बाकी सब ठीक है, चैट्स नहीं दिखनी चाहिए। ये क्या है? अरे ध्यान से, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया? ओके, एक मिनट 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 एक मिनट। ओके 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 ओके, नाइस। चलो भाई शुरू कर सकते हैं हम लोग। एक बार लाइव स्ट्रीम देख लो मैं सही चल रही है कि नहीं। बिल्कुल सही चल रही है, गुड कनेक्शन आ रहा है, खुश हैं हम, गुड कनेक्शन से खुश हैं। थोड़ा कैमरा सही कर देते हैं, और थोड़ा सही कर देते हैं, बस। दैट्स गुड, दैट्स दैट्स गुड। ओके ओके, पहली वीडियो कौन सी दिखाऊँ मैं? सब फोटोग्राफी रिलेटेड वीडियोस हैं, और ऐसी ऐसी वीडियोस है ना कि स्माइल आ जाती है देख के। बहुत अच्छी वीडियो, मतलब असली फोटोग्राफी, प्योर अच्छी फोटोग्राफी। बाकी तो इंस्टा पे कुछ भी चल रहा है, कोई बात नहीं। शुरू करते हैं, इससे शुरू करते हैं, एक तो मैं ऑडियो सही आ रही Looking है। अरे यार for the right keywords to reach your target audience? You ब्रो मुझे ओपीज क्या दिख रहा है? ओपीज पे सब सही है, मजेदार है, मज़ा आ जाएगा ये वीडियो देख के, मज़ा ही आ जाएगा। मैं चेक नहीं कर Un सकता क्या bison, इसका? c'est tellement puissant comme animal. चलो लेट्स सी। C'est un animal très gros, très massif. Finalement, on se sent tout petit face à la puissance que la nature peut avoir. Quand on l'a à quelques mètres devant nous, qu'on l'entend souffler, quand il nous regarde, c'est une intensité incroyable. Ça procure des frissons. प्यारी प्यारी फोटोज हैं यार। Avec un ami, vers l'âge de 10-11 उतने ans, on a बड़े construit une... उतने बड़े लेवल पे नहीं, पर शायद सब इस वीडियो से रिलेट कर पाएंगे जितने फोटोग्राफर्स हैं जो सुबह उठ के, या एक एक कुछ ऐसे तय करके कि आज ये फ़ोटो खींचनी है मुझे, और उससे बाहर निकलते। जैसे मैं सुबह फ़ोटो वॉक पे जाता था जब लॉकडाउन नहीं था, तो सुबह उठते थे हम लोग आराम से 4 बजे, सुबह 4 बजे जब अंधेरा होता था,
प्रॉपर ठंड में 5 बजे 4 बजे जब भी उठते थे, और सेम जर्नी होती है, वो बहुत बड़े लेवल पे कर रहे हैं और सारे ही फोटोग्राफर मेरे ख्याल से cabane छोटे छोटे लेवल पे कर dans रहे un हैं, तो arbre tout सही है। simplement. Et on a observé juste en face de cette cabane des lapins. Et on les a observés avec des jumelles. Moi, j'ai emprunté celle de mon père. Et बहुत la passion de la रिलेटेबल है nature, je pense, est फोटोग्राफर के लिए, तो vraiment बहुत रिलेटेबल है। venue comme ça. Mes premières photos étaient des photos très documentaires. Et donc, j'ai essayé de mettre plus d'espace entre moi et l'animal, क्या pour avoir शॉट है plus de भाई, respiration dans les क्या images, pour शॉट है। avoir quelque chose de plus construit. मिनिमलिस्टिक शॉट्स का अलग ही मजा होता है। J'ai essayé de mettre plus d'importance à l'environnement, au jeu de lumière, qu'à l'animal même. Je préfère faire une photo d'une petite mésange tout bêtement dans इंग्लिश un में नहीं है, super सबटाइटल bel पढ़ना। environnement. अरे हाँ, बहुत अच्छा सेंटेंस कोट किया है। I'd prefer to take a picture of a common bird in a beautiful environment Que de faire un rather oiseau très than a très rare rare dans bird finalement in une a lumière light ou un or environnement environment qui that serait wouldn't pas make très it très beau. beautiful। और इसके बाद की फोटो देखना, मजेदार फोटो, ये देखो, ओ यार क्या प्यारी फोटो। सारी फोटो अच्छी हैं इसमें, ऑफ कोर्स सारी फोटो अच्छी होंगी। फोटो देखो, बस 2 मिनट फोटो देखो, ये क्या अच्छी फोटो है यार। ऐसी सिलुएट्स, इतनी ब्यूटीफुल सिलुएट्स होती हैं, उस बर्ड की सिलुएट इतनी अच्छी आ रही है। बुके बुके में भी कुछ चल रहा है, बुके भी ऐसा नहीं कि सिर्फ लाइट वाला बुके है, सिर्फ लाइट दिख रही हैं। बुके में भी अपना ही एक अलग पैटर्न है, अपना ही एक अलग फील है उसका, सही है। ये देखो, मुझे लगता है फोटोग्राफर मिनिमलिस्टिक फोटोज ही ज़्यादा लेता है। मैंने पहली बार आज देखा, ये वीडियो पहली बार देखी मैंने आज। इस प्लेलिस्ट में है कुछ वीडियोस जो मैंने बहुत बार देखी हैं, पर ये वाली वीडियो पहली बार देखी है। अच्छी वीडियो है यार ये। अभी जब वो शुरू करेगा ना अपना डे, इसकी एक Il y a फोटो des बहुत moments अच्छी है, où quand on fait des बहुत photos, ही अच्छी फोटो où है। l'atmosphère, où la lumière est belle, où le moment en fait est tellement calme qu'on a juste besoin de se poser, d'être en accord avec l'environnement. ये अच्छी फोटोज तो क्लिक कर ही रहा है, इसको कोई बहुत अच्छा फिल्म मेकर शूट कर रहा है, क्योंकि जो लाइट का यूज़ है ना इसमें, फोटोग्राफी में सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे डिफ़िकल्ट मुझे जो लगता है वो लाइट समझना। बाकी का पता नहीं, पर लाइट समझना थोड़ा मुश्किल होता है। फोटो देखो यार, कौन कहता है सिलुएट में आर्ट नहीं होती है? सिलुएट्स बहुत अच्छी फोटोज होती हैं, बहुत अच्छी फोटोज, अगर अगर अच्छे से खींची जाए तो। C'est des moments de sérénité où en fait on attend juste sans forcément voir le temps passer, où on est complètement déconnecté, où on fait attention à plus rien d'autre qu'à la nature et à ce qui nous entoure. Et ça c'est cool. ये वापस सुनना, ये वाली वापस सुनना, का वैसे समझ नहीं आएगी तो सबटाइटल्स पढ़ना। सबटाइटल मतलब बढ़िया बातें बोली है। Temps passé, où on est complètement où on attend juste sans forcément voir le temps passer, où on est These are moments of serenity. sérénité où en fait on attend When you're juste just sans waiting forcément without voir le really temps seeing passer, time go by. où on est complètement déconnecté, You're où on completely fait attention à disconnected. You plus rien only pay d'autre attention to the qu'à la nature et à nature ce qui nous entoure. Et ça surrounding you. c'est And that cool. cool. En Europe, depuis presque 200 ans, il y a plus de bisons sauvages.
Actuellement en Roumanie, il y a la WWF qui est en train de réintroduire donc des bisons à l'état sauvage. Depuis ce projet, je suis vraiment impatient d'aller les voir parce que maintenant dans notre société, c'est tellement compliqué de एक फोटोग्राफर कितना कुछ करता है एक फोटो के लिए, कितना कुछ pouvoir करता protéger la है। nature. On a l'impression que les gens, finalement, pour eux, la nature, c'est complètement à part de leur vie alors que ça forme un tout. Et je trouve ça vraiment important, ce genre de projet, d'initiative pour notre futur, pour nous, tout simplement. बट नया है Les Carpates, c'est une région de la Roumanie que j'ai jamais vue de ma vie. Et je voulais vraiment y aller pour voir donc, ces espèces de montagnes à perte de vue remplies de vieilles forêts. Et c'est un peu un mythe en fait. थोड़ा सा skip करते हैं। Quand j'arrive à un endroit pour la première fois, donc on ne sait pas trop par où commencer, les premiers jours où on va faire la route, ça nous paraît toujours très très long. Très très long. फ्रेम देख रहा है बस। Faire la route, Beautiful ça nous जगह paraît... है। donc quand j'arrive à un endroit pour la première fois, donc on ne sait pas trop par où commencer, les premiers jours où on va faire la route, ça nous paraît toujours très très long. On se dit, on marche depuis des kilomètres et des kilomètres. On peut se dire, peut-être qu'au prochain virage, on verra le bison, il sera juste là. Ou peut-être que non, et qu'il sera seulement à 5 km où on doit encore marcher beaucoup. Et donc c'est un peu un jeu entre... जिन्होंने मिस कर दिया वो एक्चुअली कह रहा है, और एक्चुअली सारे फोटोग्राफर के साथ होता है कि पता नहीं चलता है कब तुम्हारे सामने फ्रेम आएगा और आके निकल जाएगा। मतलब तुम चल रहे हो एक अननोन प्लेस पे, चलते जा रहे हो और हो सकता है तुम्हें 1 घंटे तक 1.5 घंटे तक कुछ ना मिले, और उसके बाद जैसे ही तुम रिलैक्स होना शुरू करोगे या कहोगे यार अभी कुछ नहीं मिल रहा है, ये वो, फ्रेम ऐसे आएगा और ऐसे चला जाएगा। इसलिए हर समय रेडी रहना पड़ता है। जैसे उसने कहा कि उसको पता नहीं, अगर जैसे पता चला वो अभी मुड़ा और उसको सामने ही फ्रेम दिख गया या सामने ही उसका सर्किट दिख गया, On se dit, तो on उस marche depuis टाइम des के लिए kilomètres चाहे et des जितना kilomètres. चलना पड़े, चाहे On जितना peut se dire, peut-être qu'au prochain जितनी देर virage, on तक verra फील्ड le में रहना bison, il पड़ेगा sera juste là. तुम्हें उस टाइम के लिए Peut-être तैयार que रहना non, et qu'il पड़ता sera है अपनी seulement पूरे à 5 कैमरे के km सेटिंग। où on doit encore marcher beaucoup. Et donc c'est un peu un jeu entre le chat et la souris, où on essaye un peu de le trouver, lui essaye peut-être d'un peu nous éviter. टेंट वाला पार्ट मिस कर दिया यार, सुबह देखा था मैंने, ये दिखा ही नहीं। Je pense que la patience, c'est une des principales choses à avoir. Sans patience, c'est pas possible de voir des animaux. Si au bout d'une demi-heure, 1 heure, on en a marre et on veut sortir de la fuste, c'est juste pas possible. Il faut généralement plusieurs heures pour en fait se faire oublier de la nature. Et ça prend énormément de temps, parfois peut-être. मुझे उसकी लैंग्वेज समझ ही नहीं आ रही है, और मैंने ये वाला पार्ट मिस भी कर दिया, तो मैंने सबटाइटल भी नहीं पढ़े हैं, पर फिर भी वो शॉट इतना एंगेजिंग है। मैं देख रहा हूँ इधर क्या चल रहा है, इधर क्या चल रहा है, क्या कॉम्पोजिशन है, क्या चल रहा है, कि मुझे ध्यान ही नहीं जा रहा है क्या सबटाइटल्स हैं। मैं बात उसकी सुन ही नहीं पा रहा हूँ। बैक जाना On peut पड़ेगा। sortir de la fuste, c'est juste pas possible. Il faut généralement plusieurs heures pour en fait se faire oublier de la nature. Et ça prend énormément de temps, parfois peut-être 1 semaine pour finalement un jour où on va pouvoir faire des photos, parce qu'on saura exactement où est-ce que l'animal va sortir. ये वाइल्ड लाइफ में शायद बहुत ज़्यादा होता है, ट्रैवल में तो शायद फिर भी कम होगा। वाइल्ड लाइफ में तो बहुत होता है कि तुम बैठे रह जाओगे और एनिमल नहीं मिलेगा, और हो सकता है तुम
उठो और सामने से आ जाए। वाइल्ड लाइफ में तो बहुत होता है। अरे यार ये एड्स ना। Quand je suis en voyage et que ça fait une semaine ou une semaine et demie que j'ai fait aucune photo, je me demande mais pourquoi je suis là? Est-ce que je serais pas mieux chez moi, entouré de ma famille? ये फिर से Pourquoi je suis देखना। là? Est-ce que je serais pas mieux chez moi, entouré de ma famille, à aller voir mes amis, que d'être frigorifié dans mon affût? लाइंस बहुत अच्छी अच्छी कही गई इसमें। हो सकता है सबटाइटलिंग की वजह से और अच्छी लग रही हूँ। ये सबटाइटल करने में आदमी सोच के लिखता है ना, तो सबटाइटल करता है सही से। तो हो सकता है किसी ने प्रॉपर डायलॉग्स बनाए हों, पर बहुत अच्छी अच्छी लाइंस कही हैं। और फोटोग्राफर्स को फील होता है जब वो कहीं ऐसी सराउंडिंग में होते हैं जो एक्चुअली कंफर्टेबल नहीं होती है और बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है फ्रेम के लिए, तब उन्हें लगता है कि क्यों, क्या है ये, मतलब नहीं भी तो कर सकता हूँ मैं, ये छोड़ भी तो सकता हूँ, अबॉर्ड भी तो कर सकता हूँ। पर उसके बाद जब वो फ्रेम मिलता है तो वो एक्सपीरियंस, वो स्ट्रगल, वो सब एकदम से कवर अप हो जाता है। ऐसा लगता है हाँ मिल गया, खत्म, Quand les क्या difficultés बात है। s'accumulent, ça doit pas être un frein, ça doit être une motivation supplémentaire, parce que justement, peut-être que le jour juste d'après, tout va changer. Vu que la nature est फ्रेम tellement करते हैं। imprévisible, on peut passer 2 semaines, 3 semaines sans rien voir, et puis boum, le jour arrive où on va faire 2000 photos. मैंने यहाँ से देखा था, स्किप कर दिया था क्या शायद। Quand on attend et que l'animal arrive, quand on voit l'animal dans notre viseur de notre appareil photo, ça- शॉर्ट शॉर्ट, अरे यार मैं सो गया। quand on voit l'animal dans notre viseur de notre appareil photo, किसी बढ़िया फिल्म मेकर ने शूट किया है ये, किसी अच्छे फिल्म मेकर ने शूट किया है। इसको हटा सकते हैं किसी तरह। अरे डिटेल्स को हटा सकते हैं क्या? नहीं हटा सकते। ça provoque tellement d'émotions, c'est tellement intense comme moment, स्ट्रीम सही चल रही है। हाँ सही चल रही है। c'est un moment qui va durer peut-être 30 secondes, 1 minute, parfois 5 minutes grand maximum sur presque une journée ये d'attente. आवाज आ रही है। Mais une fois que ce clic est fait, toutes les difficultés s'évaporent. On a finalement ce micro-instant de vie qu'on souhaitait. Et j'étais finalement privilégié parce que j'étais tout seul à voir cette scène-là. Et le clic final, c'est ce qui clôture tout ça. Et ça, c'est génial. एक मिनट में रोक के ज़रा चेक करूँ स्ट्रीम पे। स्ट्रीम पे कौन 3 लोग देख रहे हैं? कोई बताओ अगर आवाज़ का कुछ इशू आ रहा Micro-instant हो। de vie qu'on souhaitait. Et j'étais finalement privilégié parce que j'étais tout seul à voir cette scène-là. Et le clic final, c'est ce qui clôture tout ça. Et ça, c'est génial. एक मिनट में रोक के ज़रा। हाँ सही चल रहा है, बेहतरीन। चलो देखते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं। भाई भाई क्या फोटोज हैं यार, लगता है कि हटाओ सोशल मीडिया भाई, ये फोटोज मोटिवेट कर देती भाई फोटोज। क्या बढ़िया लाइट है यार, क्या बढ़िया लाइट यूज़ करी गई है। मैं सच में चाहता हूँ कि मैं कभी ऐसी लाइट यूज़ कर पाऊँ। कर लेंगे, सीखते सीखते कर लेंगे, पर अच्छा है, देखते हैं। खत्म हो गया? अरे मैंने बहुत बार देखा नहीं था इसका, पूरा देख लेते हैं एक बार। मुझे फ़ॉन्ट चाहिए, किसी को अगर पता हो ना कि ये फ़ॉन्ट ढूँढ रहा हूँ मैं इतने टाइम से, मुझे मिल ही नहीं रहा है। ये जिसमें इसका नाम लिखा हुआ है डेविड, ये फ़ॉन्ट चाहिए मुझे।
डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी जॉन फॉर्ड है वो, जिसने डायरेक्टर किया है सिनेमेटोग्राफी ऐसा। दूसरा क्रेडिट्स एक बार खत्म हो जाए। ऐसा कहा जाता है जब कोई भी वीडियो आप देखें या कोई भी मूवी देखें, बहुत लोग नहीं करते हैं काम, लेकिन हमेशा उसके क्रेडिट्स देख के उठना चाहिए। जिन लोगों ने वो बनाई है वीडियो, जिन लोगों ने बनाई है वो मूवी, उनको थोड़ी सी रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं वो लोग, उनको थोड़ी सी रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। एक बार पूरा क्रेडिट्स हो जाए फिर हटना चाहिए। थिएटर्स में लाइट वाइट सब खोल देंगे, बाहर निकाल देंगे। शॉर्ट फिल्म शोकेस बाद में देखेंगे, अभी मैं अपना वो देख लेता हूँ। छोटी छोटी वीडियो ही देखते हैं ना इसमें, बड़ी वीडियो नहीं देखते, छोटी वीडियो देखते हैं। हाँ, ये है, ये ओप्पो से शूट करी गई है। इसकी जो फोटोज़ हैं वो ओप्पो से शूट करी गई हैं, वीडियोस मुझे पता नहीं, कंफर्म नहीं है, पर फोटोज़ तो इसकी ओप्पो से ही शूट करी गई हैं। ओप्पो वो फ़ोन से शूट करी है। अरे यार ऐड तो और Looking है। for the right keywords to reach your target audience? Antarctica is a land इसकी of फोटोज जो हैं, extremes, and it's got an मैं pause incredible करूँगा। grand scale, so it's very difficult to try and capture it with images. Being a National Geographic photographer जब आएंगे creates an opportunity for me to document the world, and you don't know what you're gonna uncover, and you are going into the unknown. There's always a bit of nervous excitement. And to get to Antarctica, we have to get across one of the most treacherous crossings on the planet, which is the Drake Passage. भाई क्या शॉट है। Antarctica is otherworldly. Big mountain ranges and endless seas of ice. And it's a challenging place to document because it feels like you can never really do it justice. ये फ़ोन शॉट है, ये ओप्पो से लिया गया। मतलब मैं नहीं कहता फ़ोन से शॉट लो, क्योंकि कैमरे से आदत डालनी चाहिए। कैमरे से एक टाइम के बाद कैमरा ही अच्छा रहता है। पर अगर जो लोग कहते हैं कि मुझे फ़ोन से फ़ोटोग्राफी करनी है पर मैं नहीं कर सकता, फ़ोन से तो अच्छी नहीं होती है, डीएसएलआर है तुम्हारे पास तो डीएसएलआर से ज़्यादा अच्छी फ़ोटोग्राफी होती है, या मुझे स्टार्ट करना है पर मैं कैसे करूँ, मेरे पास कैमरा नहीं है, तो भाई ये फ़ोन की फ़ोटो है। ये फ़ोटो ओप्पो से ली है किसी ने, ये फ़ोटो इसके बाद वाली फ़ोटो ये देखो, ये सब फ़ोन फ़ोटोग्राफी है। I'm trying to showcase वीडियो तो हो सकता है this फ़ोन से land ली हो, of extremes, पर मुझे जो श्योर how नहीं तो मैं बोल every single flake of snow counts towards building that incredible landscape. ये वीडियो देखना। It's ये phone strange to think that something so light can compact over thousands of years and trap so much history in the glacier. I like to be as prepared as I can be, but I want to leave myself open to inspiration from the environment. So the carving just happened and it's created a wave. We can see it push up all the ice onto the beach. There's this kind of beautiful coincidences that happen, and that's when those really special images tend to eventuate. I find special images ये इसकी फोटो थी, मैंने पिछली बार इग्नोर कर दिया था गलती से। ये इस आइस की फोटो है जो आगे वो tend to फोटो है। eventuate. ये फोटो उस आइस की है। ओ, इसलिए ध्यान ही नहीं दिया था मैंने। I find that the colours in Antarctica pulls you out of yourself, yet it is the most present that we get to be. We can see quite a lot of water pouring out of the glacier. We all know that Antarctica is deeply impacted by climate change, and I want to try and showcase that fragility through the macro and the micro. इसके
बाद आई लाइन बहुत बढ़िया। You can hear the ice releasing the air bubbles, ये नहीं है, ये and नहीं it sounds like popcorn. है। अच्छी ये भी है पर ये बोला नहीं। So we are recording underwater because most of the iceberg is under the surface. So this is going to give us a bit of a glimpse. That was on ultra steady as well. It's an electric feeling to see these images that I have envisioned and to suddenly see them come to life. He's collecting all the little rocks and he's creating a nest. उसके फोन पे लिख के आ रहा है लो बैटरी फ्लैश अनअवेलेबल। What I really love, especially with nature, is that it reveals itself gently and a ये लाइन little. है, हाँ सॉरी ये लाइन मिल गई, शुरुआत से सुनो। What I really love, especially with nature, is that it reveals itself gently and a little bit by bit. I think a big part of my work is uncovering those moments. When I capture an image that I feel like encapsulates that moment, it's a feeling of coming home. मैं सोच रहा हूँ सारे वीडियोस के लिंक इस लाइव के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ, जब पब्लिश करूँ तो इन सारे वीडियोस के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ ताकि जिनको बार बार देखनी है वो देख लें। By now, it's late October, ये बहुत बड़ा it's है। heading towards November, and we've actually ये done something वाला है। remarkable. ये देखते हैं, ये देखते हैं, हाँ ये देखते हैं, पहले उसके बाद ये देखते हैं स्टार्ट में। उसके बाद रैंडम अगर टाइम बचेगा तो रैंडम सर्च करेंगे, डॉलर को देखेंगे क्या होता है। ये फोटो है यार, ये सब कैसे होता है? वाइल्ड लाइफ वाले ट्रैवल का भी सोच रहा हूँ मैं कैसा बना दूँ, शायद एक वीडियो है इसमें ट्रैवल का, तो देखते हैं। आर्टिक की स्पेलिंग कितनी है यार, ये स्पेलिंग होती है क्या? नहीं, ये लैंडस्केप यहाँ से देखा है। ये फोटो शायद इसी फोटोग्राफर की होगी जिसके ऊपर बना है ये, और ये फोटो सेम इस आउल की और भी फोटो खींची लोगों ने, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, पर ये सेम फोटो इतना लोगों ने रीपोस्ट करी है ना, और बिना किसी क्रेडिट के। मैंने देखा, मुझे पसंद आई, पर मुझे पता ही नहीं चला कि किसने खींची है। कभी लगता था इसने खींची है, कभी लगता है इसने खींची है, पर अब इस वीडियो के बाद मुझे पता चला कि फ़ोटो इनकी है। तो देखो ऐसा लग रहा है स्पार्कल किया हुआ है किसी ने, सिल्वर स्पार्कल।
ये क्या है? ये वीडियो मैंने ही नहीं देखी क्या? आधा तो मुझे वाइल्ड लाइफ करने से इसलिए डर लगता है कि अगर ये वुल्फ उसके ऊपर आ गया इस समय, तो क्या कर लेगा ये? आ ही सकता है। भाई ये वीडियो नहीं देखी मैंने, ये वीडियो लग रहा है। ये मूव कैसे हो रहा है? Ça, c'est mon avion. Bon, allez, loup.
ये लाइट देखो क्या ड्रामेटिक लाइट आ रही है। पीछे करो पीछे करो पीछे करो। अभी देखो ये लाइट देखो। ये क्या ड्रोन शॉट है? ये शॉट है। फोटोग्राफी सीख ये देखते हैं हाउ नैट जियो फोटोग्राफर। उसका स्टीव मैकरी का एक है वो देखते हैं। Looking मैंने for किया the था right ना। keywords to reach your मैंने target उसको ऐड नहीं किया, मैं audience? सर्च कर देता हूँ। Use the keyword magic. Have you ever wondered what it takes to capture images for National Geographic? I had the opportunity to ask our friend Bob Holmes just that, and what Bob his Holmes की काफी approach is to काफी making फोटोज images that are worthy मतलब of फोटोज National अच्छी हैं, काफी Geographic. वीडियोस Here's भी what he इनकी said. यूट्यूब पे हैं। You have to prepare yourself to accept images that और give इन्हीं के साथ themselves हैं। to you. ये And जो you इंटरव्यू ले prepare, रहे हैं you सब। prepare yourself by knowing your equipment inside out so that the camera doesn't get in the way. Right. The camera is the biggest barrier to great subject. So true. So you have to know your equipment absolutely inside out. Also have to develop your eye and educate your eye. And I've done it through a passionate interest in painting, particularly 20th century. I love the abstract expressionists, for example. One of the things that मुझे आवाज ही नहीं you आ रही। need in strong composition is ओ ये some फोटो देखिए, ये फोटो example. देखिए। And I've done it There, 20th there. century. I love the abstract expressionists, for example. One of the things that ओ you need in strong composition is some punctuation. Photographs often need a punctuation point. Tell me about that in that. And in this, this young boy practicing is the punctuation. Right. And it's not, I guess you could call it a decisive moment. But it's a moment when his attitude was good. You could read him as a ballet dancer. It's obvious that he's practicing a ballet stance. Right. And those kinds of details are absolutely critical. Okay, so what's that je ne sais quoi that you how do you inject that into the photograph? You know, I'm able to go into a place and see and see images that work. I can compose things very rapidly without thinking about it. I like to get in close to subjects so that you feel part of the scene. And then the composition, I do almost intuitively. I'm always scanning the edges of the frame automatically because we're responsible for everything in that frame. You know, as a photographer, it's your fault if there's something in there that shouldn't be. Right. You know, if there's the antenna coming out of someone's head or whatever, it's your fault. You should have seen that. Take note of that, you guys. Listen to what he's saying. You have to be very, very aware. I think the most after you know your camera and have prepared yourself visually by looking at other media and other forms of visual arts that you relate to that can affect the way that you see, I think it's very important to be fully involved with your subject. Right. To take your very best photographs, you have to be on your own. Yes. And you have to give the subject 100% of your concentration. You have to be there. Right. And aware of everything. And that includes when ये you... फोटो बहुत पसंद है यार। ये सबटाइटल खराब भी कर रहा है और मुझे आवाज भी नहीं आ रही है। ऐसे देखता है। तो ऐसी पैटर्न्स वाली फोटो इतनी इंटरेस्टिंग होती हैं। जैसे उनकी जो हैट है वो उनके फेस के आसपास एकदम बढ़िया सर्कल पैटर्न बना रही है। एक आर्टिस्ट है वेद सुई करके, Looking इंस्टा पे through the है camera. वो। मैं अगर हो सकता है तो दिखाता हूँ एक मिनट। ये देखो, ये जो पैटर्न है ये
उनकी सारी फोटोज ऐसी होती हैं। बीएच सुई, हाँ ये भाई, रुको मैं देख लूँ स्ट्रीम पे दिख रहा है क्या। हाँ, इनकी फोटोज में क्या मतलब बेहतरीन पैटर्न्स होते हैं, बहुत अच्छे पैटर्न्स होते हैं। इंस्टा पे इनको फॉलो करना चाहिए। इनके फ़ोटो बहुत, सारी फ़ोटोज़ इनकी बहुत अच्छी हैं। पैटर्न्स पे भी लाइट देखो क्या, पैटर्न्स पे भी क्या बढ़िया लाइट है। फ़ोटो किधर गई वो, बहुत अच्छी फ़ोटो है वो। एक तो ये इन्होंने कहा था बहुत अवार्ड्स मिले थे इस फ़ोटो को, इन्होंने लिखा था किसी चीज़ में, पता नहीं याद नहीं मुझे। इनकी वो फ़ोटो, एक मैं फ़ोटो ढूंढ रहा हूँ इनकी, शायद बहुत पहले डाली थी उसमें कुछ। एक ये फ़ोटो मैंने देखी थी जब मैंने फॉलो किया था इनको, बहुत पहले फ़ोटो डाली थी, अभी वापस शायद रिपोस्ट करा है। तो फ़ोटोज़ देखो, इनकी फ़ोटोज़ में बहुत पैटर्न्स मिलेंगे, बहुत पैटर्न्स। और सब ये देखो, स्लो शटर फोटोग्राफी, ब्यूटीफुल स्लो शटर फोटोग्राफी, एकदम फाइन आर्ट। और ये देखो, फेस जैसा बन रहा है। अच्छा और बड़ी नहीं होती क्या? नहीं, बेहतरीन। मैं सोच रहा हूँ एक ऐसे लाइव करूँ या वीडियो में बताऊँ अच्छे आर्टिस्ट जो अभी इंस्टाग्राम पे हैं, मतलब अच्छे फोटोग्राफर्स जिनका कंटेंट एक्चुअली फॉलो करने लायक है। हाँ एक ये फोटो देखो, ये फोटो बहुत बढ़िया थी। अरे यार वो फोटो मिल नहीं रही है। सारी फोटोज ही अच्छी हैं। ये भी शायद मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा, अगर, पता नहीं मुझे कैसे डालता है लिंक वो लाइव वाले में, पर शायद एडिट हो जाती है, तो वैसे करके डाल दूंगा मैं इनकी प्रोफाइल का लिंक इसमें। लेट्स कंटिन्यू। Camera, even before you look through the camera, be aware of everything that's going on in that image that you're hoping to capture. So in this photograph, for example, the people on the bridge, these small people, and the same with these two guys here. So there's your punctuation. I moved in close, but I wanted them down here for scale. एक मिनट, मेरा कैमरा बंद हो गया, मेरा कैमरा बंद हो गया। फेस कैम ही बंद हो जाता है यार बार बार। अब ठीक है, बेहतरीन, सही आ रहा है ना? हाँ यस, सही आ रहा है। किधर है, किधर है, किधर है, किधर है, किधर है, किधर है, किधर गया भाई? ये रहा। To show how far they walk with these tremendous loads on their back. Right. And by getting in low down with a wide angle lens, it gave an impression of the weight of these things coming down from the top of the frame. And that's the kind of photograph I love. Yes. That's what I'm always striving for. I hope you enjoyed Bob's wisdom and will put it to good use. Thanks for joining us again. Be sure to subscribe now. ये देखने लायक है। अरे अभी नहीं, अभी नहीं। Do you want to learn to draw professional and impressive artwork from scratch that will blow people's minds? Hi. Have you always ये wanted? मैंने भी नहीं देखा अभी, ये देखते हैं, ये मैंने भी नहीं देखा। Your pick and choose। We bring together for you the best photographers in the world. Andy Warhol said, "My favorite color is white and my favorite color is black." So use the whites, use the blacks. Don't have 50 shades of grey. We'll have that देखते हैं ये as वाला। well, but use the blacks and use the whites. मुझे वो आवाज़ ही नहीं आ रही है, आवाज़ का बहुत दिक्कत। I got fascinated in sharks
because I felt the sharks hadn't been photographed well. After about 30 hours dedicated in the water to this, I got the big shot of the shark and the seal, and I still think it's the strongest picture of shark predation that I know, and it's pin shark. ये है फुल शॉट, ये है क्या काम। And then someone said to me, "Did you see that picture in the Daily Telegraph? Can I get a big one from my office? Because I want anyone that comes into my office to be very scared of me, and the best way of doing that is have a big shark eating something behind my desk." He said, "How much would it cost?" And I said, "I don't know. Well, we'll put it in a nice frame, maybe £5,000." And he said, "Okay, I'll have 2." And that was when the penny dropped that the way to make money from my kind of photography was in fine art, producing limited edition fine art prints that were aesthetically strong enough or evocative enough that people would put them on their wall. I think the mistake a lot of wildlife photographers make is that they go on a trip without any specific idea of what kind of African animal they're going to be shooting. And for me, you choose the animal, and then you know where you're going to go to photograph the animal. And by far and away, the best place in the world to photograph elephants is Amboseli. Wildlife photographers, many of them use telephotos far too much. If you're going to be photographing a beautiful woman, you're never going to shoot her with a 400mm lens or even a 200 or 300. You'd shoot her with a standard lens or a wide angle. And it should be the same with animals. It's then just the logistical issue is how you get yourself in a position to do that whilst remaining safe. The great beauty of elephants is there's no animal where their predicted path can be determined with greater clarity and assurance than an elephant. They tend to walk in straight lines. So if you see a herd walking across a dry lake, you get 200 yards ahead of them and you know where they're going to, within a yard, where they're going to come. You've got the peak of Kilimanjaro peeking out over the top of the clouds. And the light's getting better every 5 minutes. So probably not bad circumstances. You can see the big guy with that big tusk over there on the left. Sadly, that's about 8 grand at the local market, and that's 60 grand in China. You put the remote down, and you pre-focus, and then you get the hell out of there so that they are in no way detoured by you, and they probably don't see the camera until they're about 1.5 feet away from it, which is perfect because that's what you want. So you want proximity and a ground level perspective. Okay, so I'm going to get out of the car. I'm going to set up a remote. Almost need a bit of elephant manure. Okay, let's get out of here. Okay, let's go and grab it. There's nothing I want to do less than photograph with blue sky and sunshine. I want moody, almost sort of in photograph. आ गया, मैंने कहा था बहुत अच्छे शॉट आने वाला है। तब क्या बढ़िया जगह थी यार, ये क्या बढ़िया जगह है, मतलब ये होगी। उसने कैमरा ही सेटअप कर दिया आपने। Remote. Almost need a bit of elephant manure. Okay, let's get out of here. Okay, let's go and grab it. There's nothing I want to do less than photograph with blue sky and sunshine. I want moody, almost sort of impending doom skies, and you get that in Amboseli in October. It's the best canvas in which to paint with light and take pictures of anywhere in the world, I think. पर ये कैसे यार?
paint with light and take pictures anywhere in the world. It's the best canvas in which to paint with light and take pictures of anywhere in the world, I think. The behavior of elephants has changed because of cattle, because the Maasai brought their cattle in big numbers into the park, and that's resulted in more humans and more lions. So the elephants don't behave in the way that they used to, and lake crossings are rarer. ओवर एक्सपोज कर रहे हैं, कितना बढ़िया फ्रेम बनाया है। उसने पूरा पीछे का बैकग्राउंड ओवर एक्सपोज कर दिया है और फिर भी अच्छा फ्रेम बनाया है। I positioned the scouts on the hills overlooking Amboseli Dry Lake, and as soon as they see the beginnings of a herd crossing the lake, we'll find out. And on this occasion it was the middle of the day, which doesn't tend to suit my style because the sun's too high, but gratifyingly there was quite a lot of cloud cover. And it was a big herd, it was 25 elephants. And I didn't even have my photographic clothing on. I was just hanging around in swimming trunks and loafers. But we charged there to the lake, must have been going goodness knows what speed. And the series was about 15 minutes, but there was one lovely moment where I was lying on the ground and the elephants were about 60 yards away from me, and they just didn't know whether to go left of me or right of me. They don't tend to charge there because there is no vegetation, so they're not surprised. They know the humans there. The time you've got to be careful with an elephant is when you surprise it. But in Amboseli, you're quite safe, relatively. And they just huddled together, and I knew as soon as when I pressed the trigger, I thought this composition is coming together rather nicely. And then when I got back, I knew I'd got a very big image. Well, my approach is twofold. Firstly, that you have to be close, and borrowing from Robert Capa, if the picture's if not good enough, you're not close enough. Ansel Adams also said that the lens looks both ways. It's truer and truer as the lens gets shorter and shorter. I don't think the lens necessarily looks both ways with a 400. It's more likely to look both ways with a 50 or a 35 because it's going right back into your soul. I think also if you're photographing a dangerous animal, if your line of sight is higher than the eyes of the animal, that immediately hints at an artificial encounter. It hints at the fact that you're higher than the animal. No more so than polar bears. And I've wasted so much time photographing polar bears. Because if a polar bear comes up to a boat and you photograph it from the deck looking down at the polar bear looking up at you, that's just pulp. There's nothing interesting in that photograph other than to show your kids when you get home. So we did a lot of research as to the best place in the world to photograph polar bears and for me to get close and be safe. And we found a place where, for about a week, it's very strange behavior in that the polar bears seem to be in collaboration with the humans because the Inuits are whaling and they bring whales. In a fast-forward world that's turning digital, photographer Steve McCurry is pausing to document the end of an era. Basically, क्या है डिजिटल क्योंकि इतना अच्छे स्टार्ट हो गया था, कोडक ने अपनी फिल्म्स बनाना बंद करने का मतलब अनाउंसमेंट कर दिया था कि अब नहीं बनाएंगे, हम अपनी वो जो फिल्म्स होती हैं और जो मैनुअल कैमरे होते हैं वो सब नहीं बनाएंगे। तो इन्होंने एक चैलेंज लिया था, 36 फ्रेम्स होते हैं शायद उसमें फिल्म में, उस हर एक फ्रेम को मतलब हर एक फ्रेम से अच्छी फ़ोटो लेंगे, हर एक फ्रेम से एक ऐसी फ़ोटो निकलेगी जो बहुत अच्छी होगी, मतलब एक भी फ्रेम वेस्ट नहीं होने देंगे। He's going to shoot the very last roll of Kodachrome film to come off the assembly line. There's just one question. What do you do with the last roll of this legendary film? Probably the best film ever made. That's perfect. One roll, 36 frames. That's all Steve will have to shoot the final chapter of the Kodachrome saga. That's it.
Professional and amateur photographers alike have had a love affair with Kodachrome film. Its hallmarks: rich, true color and legendary durability. But like all good things, its time is coming to a close. In 2009, Kodak announced it would cease production. There would be no more Kodachrome film. Digital is here to stay. It was an event that would have passed without fanfare. But one man saw an opportunity to pay tribute, and he asked for the last roll. My name is Steve McCurry. I'm a photographer. I started my photography career in college. When I got out of school, the first job that came along was working on a newspaper. But my real ambition was to find a profession, hopefully in photography, which would allow me to travel and see the world. So after 2 years at the newspaper, I left. I got a ticket to India and went there with a couple hundred rolls of Kodachrome and started my freelance career. I got my first assignment from National Geographic. They liked what I did, and they kept giving me assignments. I've done, I don't know how many stories, but I've been working almost continually for National Geographic for 30 years. I think most of my best photographs were shot on Kodachrome. I probably have an archive of around maybe 800,000 slides. Kodachrome really kept its color, and the color was sublime. Rich colors, not too garish. It was really the best rendition of reality. So when I realized that this was ये फोटो इनकी सबसे ज़्यादा फेमस फोटो है, Nat Geo के कवर पेज पे आई थी। coming to an end, I wanted to have the last chapter in the book on Kodachrome. Controversial फोटो भी है ये। Here's the last roll right here. I'm going to put it. When I loaded that last roll of film into my camera, it was kind of a strange feeling because I had done it thousands and thousands of times, and it became second nature. To go back and do that action again was a bit strange, a little bit nostalgic, kind of a remorse somehow that this was the last time I would do that. Okay, there we go. It's all set, all ready to go. I've worked on so many assignments over the years, and I wanted this to be something for me, something for my heart, something that photographed things that spoke to me personally. It's a luxury and a challenge few photographers can afford. For this shoot, he's carved out a 6-week window between other assignments. He'll travel where he pleases and foot the bills. Other than that, nothing's set in stone. I don't really have any plan in terms of what I'm going to photograph. For me, the most fun of photography is to walk out the front door of your home or the hotel, and life is out there and you just improvise. It's really about observation, walking around and then discovering. And if walking out your front door lands you in the heart of New York City, that's a fine place to start. Even though I live in New York, I often don't really get out to look around and see these wonderful neighborhoods. Steve takes his digital camera along to try out potential photos. If he likes the test shot, he'll break out the Kodachrome camera. Washington Square Park, great location. There's all this sort of buzz and lovers and people reading and people with dogs and people playing Frisbee. Chinatown is such a fascinating place because you really feel that you're in a back street of Hong Kong. Good pictures are made up of interesting situations, good light, particular moment. There's an element of composition and design that kind of comes into it. So you're constantly evaluating things moment to moment and trying to find something that's inspiring and visually interesting.
and something that that moves you. There's certainly a lot to see, but Steve's not seeing a photo. Maybe the neighborhood idea needs a rethink. Perhaps he should focus on something more monumental. I was thinking the Brooklyn Bridge could be a great location, but perhaps for some security reason, they've closed off the best location underneath the bridge. And the place where you can get closest, it just doesn't work graphically. The shapes don't fit together. The biggest challenge in Times Square is to try and sum up the glitz and neon in one actual exposure. Maybe it's better even not to do that, because I wouldn't want to just come up with some sort of postcard image that just shows all the lights and all that, without it really being heartfelt and something that really is a human story. Undaunted, Steve presses on to another New York supersized icon. This is probably as good as it gets in New York City, right here. And I think it's an amazing place, and I think it could really work for one of my 36 shots. It could just as easily happen, maybe not in the Grand Hall at Grand Central. Maybe it's in one of the lower corridors where there's some play of light and shadow and some little human story happening. Great locations, perhaps, but only one photo to show for all the time and effort. And 35 more before he can see what he's got. A far cry from the digital camera's instant gratification. Now the weather's turned nasty. It's cold, it's sort of windy, it's drizzling. There's not a lot of action on the street. Everybody's on their way to some place. You don't have anybody really doing anything. I mean, as a kind of a street photographer, I like getting people doing things on the street. When you only have 36 frames and you want to make each one special, you want each one to be an interesting picture, there's a lot of pressure you have on yourself because each picture has to count. And the day it rained in New York, it was hard to work outside, and it just wasn't coming together for me. Time to regroup, refuel, and warm up. And it seems to be working. Steve's hatched an idea. I wanted something iconic of New York City. And then I thought, well, what about a personality like Woody Allen or Scorsese or Al Pacino or Robert De Niro? As it turned out, a lot of these people were out of town on film shoots. All that is but one. Hey, good morning. Hi. Steve McCurry. Actor Robert De Niro agrees to sit for a portrait. So this is the last roll of the Kodak film? The absolute last roll? He'll give Steve 30 minutes. Steve goes to work, firing off a few test shots with a digital camera. That'll work. De Niro lives in New York. He's a great actor. I've watched most of his films. And I think he has such a depth of talent and presence. I just have an enormous amount of respect for him, his craft. You want to count and I'll just blink before? Yeah, I'll count on 3. 1, 2, 3. Okay, that's one exposure. And then I'm going to try one at 4. By the end of the session, Steve's got 3 more frames. Good. And a plan. Since every frame of this last roll has to count, I decided to make a series of portraits. If you only have one frame, you can't take any risks about somebody moving or whatever. You need to be very careful, very judicious. Portraits it is. Now it's a matter of who
and where. To commemorate his reunion with Kodachrome, Steve decides to return to the place where it all began. After New York, I was thinking, where else in the world can we go to continue this last roll of Kodachrome? And for me, the most logical place, the most visual and culturally just amazing is India. One of the things that really attracts me to India is the vibrant colors. Color is really integral to Hinduism. In Mumbai, India's most populous city, Steve hits the street, scouting for faces. He's bound to encounter a few in Dharavi. It's one of Asia's largest slums, with nearly 1 million inhabitants. My kind of photography is very much about searching and exploring and wandering and observing to really kind of get the vibe of the place, to meet the people. When you confront people with your camera and you ask people to take their picture, often they're a bit apprehensive or they're a bit shy or maybe embarrassed. But I think the way to break through that is to take a break from shooting and just to talk to them for a minute. This is a good thing. This portrait we're going to work together on is going to be fun and interesting and respectful. I would start by shooting with the digital camera to examine the light, the composition, the design of the picture, and then once I felt everything was okay, I took out the film camera. I just took this camera out of the camera bag after being in the air-conditioned hotel all night. I'm going to give it a couple of minutes to sort of acclimatize to the temperature. I don't want it to fog up. And he doesn't want it to move either. Steve sets up a tripod to make sure the camera stays rock steady. Normally when I used to shoot Kodachrome, as people's expression changed, I would photograph that change. That's always the reason why you shoot more than one frame. But with the last roll, with only one exposure per subject, you can't take any risks. Mumbai is also the home of Bollywood, a multi-billion-dollar film industry. I thought that it would be fun to photograph some of the iconic figures in Bollywood, which is sort of the Hollywood of India, because we had started with Robert De Niro, and there's no more famous personality in India than Amitabh Bachchan. So we requested him, and he was very kind to it. I thought when right on the blink was the Spartans charted. But Steve has the idea of these in state north of Mumbai for a Bahari show, and now time is running out on their is what better these Rabari shepherds that live in Rajasthan. It's really like going to another planet. The landscape, the way people dress, their traditions, the religion, the music, the food. Almost everything about it is kind of strange. There was this big thing. Once it was actually the festive, like a snake too, and people, if I can take their picture. But it's something that I have to do, and once I kind of get warmed up, once I kind of the wheels start to move, then it becomes very natural, and I'm very happy and very interested in meeting people and talking to villagers. Very low. Okay, 1, 2, 3. Great. Perfect. Tom, I want him to come to New York. I mean, I could be his agent. He tells fortunes. He does magic tricks. He's a snake charmer. I think we could. The other features. I think it's the totality of the particular look. It's not one particular feature. It's all of them working together. That's it. After a week,
Steve snapped 30 photos, and he's ready to move on to any place that has air conditioning. This is our last day in Rajasthan, and we've come at the absolute hottest time of the year. The monsoon is due to come here maybe in a week. It's dry, it's hot, and it's just often unbearable. So that's the only challenge right now, is to try and kind of stay cool. My last roll of Kodachrome is kind of winding down and coming to a close. I think we have a wonderful, it's going to be interesting to see what we get. Photo in Parsons, Kansas. Grant, are you Steve? It took 6 weeks and some 30,000 kilometers, but Steve has shot all 36 frames. There it is, right There it is, Kodachrome 64. KPR. Now it's time to see what develops. It will take about 40 minutes for the roll to slither through the chemical bath. I saw the film going through the dryer, and when I saw it going through the dryer, I knew that we had images on the film. The last step, mounting the slides. But not so fast. Okay, this is not normal. An old-fashioned machine jam. And a time-honored remedy. Just give it a whack. At last, the slides start to roll. And Steve is presented with the fruits of his labor. Okay, let's see. I wonder if there's any images on this roll. I sure hope so. So this is... All here and accounted for. Wow. I've just decided I think I'm going to give up digital photography and go back to Kodachrome. Look at this guy. This is a magician in India. Now that's just an amazing, amazing image. I'm very pleased with what we got, and I think it's a really wonderful range of pictures, starting with Robert De Niro in New York. In life, you respond to certain things, and I think as I'm photographing, I'm responding to the world in a visual way. You want to communicate some of these things and say, you know, look what I saw or look what I've learned. I wanted to have at least one picture of myself. But other than that, nothing's scripted. We kind of go out and look for interesting situations, interesting people, and just try and make it as kind of off the cuff as possible. For Steve, the last roll is bittersweet, a reminder of what once was. It took me back to the days of film. It made me long for the colors and the tones and the hues of Kodachrome, and how beautiful and how poetic the images are. Kodachrome was a great film, and it'll be thought of with great fond memory. Frame number 30. इंस्टाग्राम पे स्टीव मैकरी को फॉलो करना चाहिए बस एंड करनी पड़ेगी शायद हाँ भाई 6 बज गए 6 बज गए अब तो एंड करनी पड़ेगी लास्ट एक बार मैं स्टीव मैकरी इंस्टाग्राम खोलता हूँ भाई फॉलो करके फोटोज देख यार फोटोज बढ़िया फोटोज बेहतरीन ये फोटो सब मैंने मिस कर दिए क्या ये मैंने देखी नहीं कुछ भी कर रहा है इंस्टाग्राम ऐसे आधी फोटोज तो दिखाता ही नहीं है
ये भी नहीं देखी मैंने। बेहतरीन फोटो। चलो वैसे आज का ख़त्म करना पड़ेगा। शायद 7 बजे दोबारा लाइव आएंगे हम, शायद 7 बजे। अरे क्या बोला, 1 मिनट। अभी तो लाइव खत्म करनी पड़ेगी, 7 बजे लाइव आएंगे, इस लाइव को पब्लिक कर देंगे और बस इतना ही, इतना ही। 7 बजे नहीं आ पाएंगे, शायद 7 बजे नहीं आ पाएंगे, 8 बजे के आसपास लाइव आएंगे दोबारा। चलो भाई, चलो चलो चलो, एंड स्ट्रीम, एंडिंग स्ट्रीम इन 3, 2, 1 एंड।